everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss about a chapter of mathematics that is fractions. Students, हमने होल नंबर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. जो भी मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके होल नंबर के वीडियो सीरीज को देख सकते हैं. ठीक है, तो ये फ्रैक्शन क्या होता है? हम अगर जनरली बोलेंगे फ्रैक्शन इज नथिंग बट पार्ट ऑफ होल. क्या? पार्ट ऑफ होल. And the whole may be a single thing or some group of things. Okay? Single thing or group of things. तो इसको चलो अभी हम समझते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, बर्थडे किस किस का है आज? अच्छा देखो, बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. हम लोग क्या लाते हैं बर्थडे में? बर्थडे केक लाते हैं. वो सपोज सोच लो ये तुम लोगों का बर्थडे केक है. जिनका आज बर्थडे नहीं है वो भी अपना बर्थडे याद करो कि ये सपोज तुम्हारा बर्थडे केक है. ठीक है, देखो जब हम लोग बर्थडे केक लाते हैं क्या होता है, ये पूरा का पूरा अच्छे से रहता है बर्थडे केक. ठीक है, एक होल रहता है. ठीक है, तो वो है एक होल. फिर हम क्या करते हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू. केक कटिंग सेरेमनी होता है, हम केक काटते हैं, फिर एक एक पीस उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो चलो फिर हम केक कटिंग सेरेमनी अभी यहां पे करते हैं. ठीक है, सो जिसका बर्थडे है वो भी सोचे कि मैं उनके लिए उनके तरफ से केक कटिंग सेरेमनी कर रहा हूं. ओके स्टूडेंट्स, सोच लो मेरा जो केक था उसका केक कटिंग सेरेमनी हो गया. अभी मैंने क्या किया, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो मेरे सारे फ्रेंड्स आए हुए हैं तो मैं क्या करूंगा, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करूंगा. पार्शलिटी तो करना नहीं है, सारे तो मेरे ही फ्रेंड्स हैं. तो मैं क्या करूंगा, केक को इक्वल साइज में कट करूंगा. ठीक है, तो ये देखो यहां पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मैंने क्या किया, इसको 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. सी फ्रॉम माय डायग्राम यू माइट बी थिंकिंग दैट सर these are not equal parts. Yes, these are not equal parts, but just think about it that these all are equal in size. Okay, so 16 equal parts. तो मेरे फ्रेंड्स को बोलूंगा हाँ भाई ले लो, सबके पास मैं देने जाऊंगा. तो कोई बोलेगा ठीक है मैं एक पीस ले लेता हूं. ठीक है, वो एक पीस केक ले लिया. तो क्या किया, एक पीस लिया, वो 1 पार्ट आउट ऑफ 16 पार्ट्स. 1 पार्ट आउट ऑफ 16 पार्ट्स. फिर और एक फ्रेंड के पास जाऊंगा, उसने सपोज बोला देखो मेरे को चाहिए 2 पीस. ठीक है, मैं बोला ठीक है तुम 2 पीस ले लो, उसको मैं 2 पीस दे दूंगा. तो ये क्या हो जाएगा, 2 पार्ट्स आउट ऑफ 16 पार्ट्स हो जाएगा, है ना. वैसे ही किसी ने 1 लिया, किसी ने 2 लिया, किसी ने 3 लिया. ऐसे करते करते हमारे सारे पार्ट्स खत्म हो जाएंगे, है ना. धीरे धीरे केक पूरा खत्म हो जाएगा क्योंकि हमने जितने भी पीसेस बनाए थे 16 पीसेस उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरा का पूरा. तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 16 पार्ट्स आउट ऑफ 16 पार्ट्स. 16 पार्ट्स आउट ऑफ 16 पार्ट्स खत्म हो जाएगा. तो अभी ये ध्यान दो कि हमारा केक एक पूरा था, इसका मतलब होल था. कितना था, 1. तो ये 1 केक था, एक केक जिसको हमने 16 पीसेस बनाया. तो एक होल केक था जिसको हमने 16 पीसेस बनाया. मतलब एक होल को हमने 16 पार्ट्स में डिवाइड किया. ठीक है, और उसमें से फिर हम जिसको जितना चाहिए उसके हिसाब से पीसेस हम देते गए. जैसे कि 1 पार्ट आउट ऑफ 16 पार्ट्स, 2 पार्ट्स आउट ऑफ 16 पार्ट्स. क्यों हम लिख रहे हैं आउट ऑफ 16 पार्ट्स? क्योंकि ये जो केक में एक्चुअली 16 इक्वल पार्ट्स थे. ठीक है, तो इसलिए हम लिखते हैं 1 पार्ट आउट ऑफ 16 पार्ट्स, 2 पार्ट्स आउट ऑफ 16 पार्ट्स. तो ये हो गया एक समरी. इसको अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें
तो किस तरह से करेंगे अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स थे? नंबर ऑफ पार्ट्स थे 16, ठीक है। इसका मतलब 16 आउट ऑफ 16 थे। एक भी हमने किसी को दिया नहीं था, पहले हमने 16 पार्ट्स किया, तो हमारे पास 16 आउट ऑफ 16 थे। फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन जब शुरू किया 1 आउट ऑफ 16, 2 आउट ऑफ 16, ऐसे कर करके हमारा ये फिनिश हो जाएगा पूरा केस, ठीक है। तो अभी देखो इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम इसको करेंगे 1, तो इसको हम करेंगे 16 बाय 16, ठीक है, 16 बाय 16, ओके। 1 आउट ऑफ 16, 1 आउट ऑफ 16 मतलब 1 आउट ऑफ 16, 2 आउट ऑफ 16, 2 आउट ऑफ 16। तो इस तरह से मैथमेटिकली हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे। स्टूडेंट्स, तो अभी हम फ्रैक्शन के डिफरेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने देखा, हमने फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया था? 16 बाय 16, 1 बाय 16, 2 बाय 16, इस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया। सो स्टूडेंट्स, एवरी फ्रैक्शन इज डिनोटेड इन द फॉर्मेट ऑफ a बाय b, और यहां पे एक कंडीशन हमेशा रहता है कि b इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, ओके। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ? a बाय b मतलब a डिवाइडेड बाय b। हमने होल नंबर्स में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। जो भी मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे होल नंबर के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, a बाय b मतलब क्या हो जा रहा है? a हो रहा है आपका डिविडेंड और b हो रहा है डिवाइजर, ठीक है। तो डिविडेंड a है, डिवाइजर b है, तो b 0 हो नहीं सकता, क्योंकि a डिवाइडेड बाय 0 इज नल एंड वॉइड, इट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए कभी भी अगर कोई फ्रैक्शन होता है, उसका जो नीचे जो नंबर होगा वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ये ऊपर जो नंबर होता है वो एक्चुअली होता है क्या? तुम्हारा डिविडेंड, और इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। नीचे जो नंबर होता है वो होता है एक्चुअल क्या? डिवाइजर, उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि इनको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, किस तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे हम अभी a बाय b बोल रहे हैं, यहां पे बोले 16 बाय 16, 1 बाय 16, 2 बाय 16, और किस तरह से हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई भी फ्रैक्शन लिखते हैं, हम कुछ फ्रैक्शंस को अभी एग्जाम्पल के तौर से डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये हम कैसे बोलते हैं? 1 बाय 5, 2 बाय 7, 18 बाय 20, ओके। और किस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये देखो, हम 1 बाय 5 को बोलते हैं 1/5, 2 बाय 7 को हम बोलेंगे 2/7, 18 बाय 20 को हम बोलेंगे 18/20, ठीक है। 1/5, 2/7, 18/20, इस तरह से भी हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, अभी चलो हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं, तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट हमारा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, जितने भी डिवीजन है इनको हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे और उनको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे वो भी देखेंगे, ठीक है।
So the first one is 3 divided by 7. That means 3 by 7. Where 3 is the dividend and 7 is the divisor. और इसको हम कैसे बोलेंगे? 3/7. ठीक है? फिर 12 divided by 15. That is represented as 12 by 15. और इसको हम कैसे बोल सकते हैं? 12/15. ठीक है? 12/15. 8 divided by 25. That is 8 by 25. And it is pronounced as 8/25. 11 divided by 16 will be represented as 11 by 16 and will be pronounced as 11/16. Okay? Hope you understand how to represent the division in fraction and how to pronounce them. So students, let us now see how we actually pronounce any fraction when it is related to a whole number. Okay? तो students, अभी हम क्या करेंगे? हमने जो केक का एग्जांपल लिया था उसको ध्यान में रखते हुए डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे. ठीक है? वहां पे क्या था? हमने केक को 16 पार्ट किया था. फिर हमने क्या किया? 1 part of 16 लिया, 2 part of 16 लिया, 3 part of 16 लिया. ठीक है? 1/16 means 1 part out of 16 equal parts, which is denoted as 1/16th. So by seeing 16th, we can understand that there is a whole. Okay, in our example, it is a whole full cake. Okay, and it is divided into 16 equal parts. So let this be anything. That many equal parts are there in the whole. And 1 means the parts which are taken out of the whole. These are the parts taken out of the whole. And this is number of equal parts. In this way, we can come to understand the value of the fraction. That means how many equal parts are there and how many parts are taken out of those equal parts. Okay. Same way, 2/16 means 2 parts out of 16 equal parts. That means there are 16 equal parts and we have taken out 2 parts out of that. So in this way, the value is represented in case of fraction. Okay? Hope you understand. Students, let us now discuss some examples to understand this concept in a better way. Okay? Suppose there are 50 students in a class. So students, you need to understand that now these 50 students, they make a group. So this is also a whole. So as per fraction, we need to represent these 50 students as a whole, one whole. Now suppose there are 28 boys and 22 girls. Okay, so 28 boys, 22 girls. So while representing the value of boys and girls in fraction, what we need to understand that 28 boys out of 50 students. That means 28 boys out of 50 students. So how to represent 28 out of 50? 28 out of 50. We will represent the fraction like this.
Same way, how to represent 22 girls in fraction? 22 out of 50. That means 22 parts out of the whole, which is now containing 50 students. As I have already told you, whole might be a single thing or a group of things. So here the whole is group of 50 students. Out of 28 boys are there, so 28 out of 50, 22 girls, 22 out of 50. Okay, hope you understand. Students, suppose I have rupees 150. Okay, I spend rupees 110. So remaining rupees 150 minus rupees 110, that is rupees 40. So I have spent 110 and rupees 40 is now remained with me. Okay, so how to represent these in fraction? First of all, here the whole is 150. You will say, sir, there are 150 rupees. So how we are considering as a whole? Because now we are concerned about the whole amount of rupees, not a single rupee. Okay, so this is why it is a whole. In this case, this is whole. Okay, group of rupee, total 150 rupees. Okay, so spent 110. So when I represent this, I write 110 spent out of 150. 110 spent out of 150. So this should be your fraction. What is the amount that is left with me? 40 out of 150. 40 out of 150. So students, this is the fraction that represents the amount that is left with me, and this is the fraction which represents the amount that I have already spent. Students, there are some other ways to represent these fractions. We will discuss that later on. Now, just focus on the basics of fraction and just try to understand why and how a fraction is represented. Okay? Students, let us now concentrate on these pictures and find out the fractional values of the shaded boxes in each case. Okay. In the first case, there are 1, 2, 3, 4, 5 parts, and the bigger box, that is a rectangle, it is the whole. So whole is divided into 5 equal parts and 2 parts are shaded. So we will represent it as 2 parts out of 5 parts. Okay. In the second case, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 total boxes, out of which 3 boxes are shaded. So it will be 3 out of 6. Okay. You need to concentrate on the third shade. Okay. So it is actually divided into 2 parts and 1 part is shaded. So you will say that, sir, it is 1 part out of 2 parts, but it is wrong. Why? Because I have already told you partition should be equal. There is no equal partition in this case. The shaded portion is greater than the unshaded portion. So this is not 1 by 2. Now you will see that if I divide it like this and make it 4 parts, and now we can represent it as 3 by 4, because now 4 parts, just bear with me, okay? These are not equal parts, but just think that these all are equal parts. So 3 by 4 means 3 parts out of 4 equal parts. Now this is the correct representation of the shaded portion. Initially
the shaded portion was greater than the unshaded portion, that means the whole shape is not divided into two equal parts. The parts were different from each other. That's why we could not represent that as 1 by 2. But if we divide the shape into 4 equal parts, then the shaded portion is represented as 3 by 4. Hope you understand. Students, let us now discuss some examples from our day-to-day life. One day, that is 24 hours. Okay, suppose I read for 12 hours, sleep for 6 hours, and the remaining, that is 6 hours, I spend in other day-to-day activities. So how will we represent the duration that I spend on reading, sleeping and in other activities? This is 12 hours out of 24 hours, 6 hours out of 24 hours, and this is also 6 hours out of 24 hours. In this way, you can also find many examples around you and you can represent those in fractions. Make it a practice in the initial stage. Just have some fun with your day-to-day life, because that will make you understand the concepts better. Suppose you have 20 sweets and you have given 10 sweets to your brother. That means you have given 10 sweets. 10 sweets out of 20 sweets. So fraction is 10 by 20. Okay. Suppose again your sister comes. You have given 5 sweets to your sister as well. So you will give 5 out of 20. Always remember, your whole is the denominator and the parts are the numerator. Okay, and you will find that when you add the numerators, then that will be nothing but the value of the denominator. Just have a look in this example. The numerators are 12, 6 and 6. 12 plus 6, that is 18. 18 plus 6, 24. So 12 plus 6 plus 6, that is 24, which is our numerator, and the denominator is also 24. So 24 parts out of 24. That means 24 divided by 24, which is nothing but 1. That is why we might be considering a single thing or a group of things. We will always consider them as a whole. Okay, hope you understand. Students, we have discussed the basic concepts of fractions, how to represent them, how to write them, how to pronounce them, and how to relate them to our day-to-day life. Okay, hope you have understood everything clearly. If not, please watch the video again, and if you have some doubts, then please mail to me on the email ID that is given on your screen. Okay, if you are new to my channel, please subscribe to my channel and press the bell icon so that you will be notified whenever I upload a video. Okay, हमेशा ये ध्यान रखना है कि हर किसी के अंदर एक चैंपियन छुपा रहता है, बस उसको एक मौके की जरूरत है। तो उस मौके के इंतजार में रहना है, लेकिन उस मौके के लिए प्रिपेयर्ड भी रहना है। So keep revising whatever you study, keep practicing more and more for a better and bright future. Enjoy your life and keep smiling.